Good afternoon, everyone. So here we meet again. So there's some last minute change in the schedule. ठीक है, अच्छे हमारा एल नीनो खत्म हो जाएगा आज. So रिवाइज किया है? नहीं? तो उस दिन का उसी दिन रिवाइज होना चाहिए था ना. ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो सिंपल था. इसमें ज़्यादा तो आई डोंट थिंक देयर इज मच कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स. सो क्या बात हुआ था? ओशन करेंट्स, द सिग्निफिकेंस ऑफ ओशन करेंट्स, सो हाउ इट इम्पैक्ट्स द वर्ल्ड at different levels in different manner, the economic activity, the physical conditions, the climatic conditions, the growth of vegetation or the aquatic life, all of this will be impacted. Then the idea of upwelling, downwelling, thermohaline circulation, that is the circulation of oceanic water driven by the differences in density of water caused by the differences in temperature and salinity. Okay, temperature and salinity की वजह से वो जो difference होता है, that is what is thermohaline circulation. In that, a part of it is AMOC, Atlantic Meridional Oceanic Circulation. So AMOC is weakening due to the climate change as noticed by AR6 of IPCC, and the factors responsible for weakening is the reduction in the temperature between the temperature difference between the polar and tropical regions, and weakening of North Atlantic drift, and the weakening of excessive addition of fresh water, all of this. And the impacts are multifold in terms of disturbance of fishing zone, disturbance of temperature across the western European countries, British climate, and the oceanic currents are getting impacted, and increased number of cyclones, submergence in some parts of the oceans, the continents related to the increase in the sea level, and then the entire disturbance of marine ecosystem, all of this. We also discussed briefly about water mass, what is water mass and the overall significance of it. यहाँ तक बात हुआ था, है ना? And mapping का भी हमने किया. Overall mapping part, I have covered just the basic part, कि जो मोस्ट बेसिक हम माना जाता है वो कवर हो गया. सो बाकी तो यू शुड स्टार्ट डूइंग द मैपिंग फ्रॉम योर एंड. So we are here. ओशनोग्राफी में ठीक है, I'll talk about this. So oceanography का जो पार्ट है, मेजर पार्ट इज ओशन बॉटम टोपोग्राफी, ओशन टेम्परेचर, सैलिनिटी. ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मेंस रिलेटेड टॉपिक है ना, जहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है. दिस इज एज इट इज प्रीलिम्स का पार्ट. दिस इज मेंस का पार्ट, कोरल रीफ, कोरल द कंडीशंस फॉर कोरल रीफ एंड देन डिप्लीशन.
ओशनिक करेंट्स एंड सर्कुलेशन हो गया. सो अभी आएगा हमारा एल नीनो एंड रिलेटेड फिनोमेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. So we'll be spending this class on this part. So next class we'll be finishing this tides and biogeography. Biogeography is a small unit, so that would complete our physical geography. Then we'll start with Indian physical geography, which is just the application of whatever we have learnt. कि 3-4 क्लास में वो हो जाएगा. Indian physical geography is majorly mapping related, we will cover separately. जो mountains, plateaus, peaks, ग्लेशियर्स, ये सारा चीज़ तो अभी क्लास में नहीं कवर करेंगे. सो बचा क्या? द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास, है ना, एंड ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिमालयास, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेटो रीजन एंड वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ये जो डिफरेंस है, एंड रिवर्स, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, जो ओवरऑल सिस्टम क्या है, मेजर रिवर्स कौन सा है. Then the climate, monsoon का mechanism तो briefly पता है. We'll bring all the factors together and we'll explain the mechanism of monsoon and distribution of rainfall. And then the last part is soils of India. So 4 क्लास में आराम से हो जाएगा. तो उसके बाद में हम कवर करेंगे economic geography. So that would be the last part. Let's see. So अभी यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए. Yeah, you were asking something. Upwelling is more active in the regions of cold ocean currents. Yes, because cold ocean currents are usually present near to the western margins of the continent. Western margins of the continent experience offshore trade winds. Offshore trade winds की वजह से upwelling होता है. ठीक है. Anything else? So corals are usually referred to that symbiotic relationship between the coral polyp and zooxanthellae. That is what is one particular part of it is coral. Coral reef is that entire huge structure which is developed, है ना, पूरा जो कॉलोनी बना देता है, that is what is usually called as coral reef. टेक्निकली ऐसे होना चाहिए, बट जनरली दोनों इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. The fishing activity, it depends on the location. It can be great in both the cases. For example, see, if you compare the regions of Peru cold ocean current and the Kuroshio-Oyashio current, Peru is greater. But if you compare the regions of Kuroshio-Oyashio with the Gulf Stream and Labrador current, Gulf Stream Labrador current is greater, because see, it is just creating a favorable condition. It creates a favorable condition. In addition to that, there are a few more other factors which will come into picture. So depending on that, the overall fishing ground will be developed. So why northeastern region of USA has higher fishing ground? It's because of wider continental shelf. So that is another factor over there, wider continental shelf. ठीक है. And Peru Humboldt region तो it's most famous because of the overall upwelling, and upwelling की वजह से it's very very strong over there. Okay, it depends on the local condition. ठीक है. Both are good regions जहाँ पर condition तो favorable है. African region no, it's not very strong. It is the favorable. Benguela current is favorable. The Canary current is favorable, but not as strong as our Peru current. Cold ocean currents, when it meets the warm ocean current, then only that downwelling happens, because it's the merging of two different conditions, right? So otherwise, the upper force will drag it upwards. It will keep moving as long as it is not meeting a warm ocean current. Anything else? So how to do mapping from our end? ये तो मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था, दोबारा बता दूंगा. देखो, सो बेसिकली मैपिंग का मतलब क्या है? यू हैव टू रिमेंबर द इंपॉर्टेंट लोकेशंस.
इंपॉर्टेंट लोकेशंस रिलेटेड टू जियोग्राफी, जो जियोग्राफी रिलेटेड है वो सब याद होना चाहिए आपको. सो लोकेशन याद होने के लिए क्या करना है, यू हैव टू मार्क इट ऑन द अटलस. एक हाईलाइटर लेके मार्क करना है. दूसरा कि उसको कहीं पे एक लिस्ट बनाते जाना है. ओके, सो यू कीप मेकिंग ए लिस्ट विथ ए वेरी ब्रीफ वन लाइन इंफॉर्मेशन. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू. Whatever the location you want to remember, first mark it on the atlas with a highlighter or something, and then make a list in the separate note which you are maintaining. Now comes to which location to be chosen. कौन कौन सा location करना है. The locations are of two types, one is static, another one is current related. Static locations आपको कहाँ पर मिलेगा. Static location का मतलब क्या है, the locations which are important from geography's perspective. जो geography पढ़ता है इसको पता ही होना चाहिए कि रॉकीज कहाँ पर है, एंडीज कहाँ पर, ये तो पता होना चाहिए. वेदर इट इज इन न्यूज और नॉट, यू शुड नो अबाउट दी सम इंपॉर्टेंट स्टैटिक लोकेशन, तो आपको पता होना ही चाहिए. तो ये स्टैटिक लोकेशन में मेजर पार्ट आपको मिलेगा ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक्स में, नोट्स में, जब क्लास में डिस्कस करते करते जो भी लोकेशन में बताऊंगा ये सारा आपको मिल जाएगा. उसको भी एक लिस्ट बनाते जाओ. ठीक है, इसके अलावा देर आर फ्यू मोर लोकेशंस विच वी विल कवर इन द मैपिंग क्लास. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द कंट्रीज सराउंडिंग मेडिटेरेनियन सी, which countries come under Central Asia, okay, which are the countries of Central America. ये भी इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. सो जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी भी में कवर करते हुए तो कभी भी नहीं आया, तो ऐसे हम अलग सा कवर कर लेंगे. ऑल दीज आर स्टैटिक लोकेशंस. करेंट लोकेशन भी, मेनी ऑफ द करेंट न्यूज़ आइटम्स, द प्लेसेस विच यू सी इन द न्यूज़, ये सारा आपको मिलेगा. जब भी न्यूज़पेपर में आप देखोगे तभी इमीडिएटली आपको मार्क करना है एंड उसको लिस्ट करते जाना है. सो डेली बेसिस में मिलते रहेगा. लाइक यू रीड न्यूज़पेपर रेगुलरली, आपको मिलेगा 2-3 तो मिल ही जाएगा इंपॉर्टेंट लोकेशंस. सो उसको ऐसे मार्क करते जाओ. एंड दूसरा, एट द एंड ऑफ द मैपिंग सेशन अगेन वी विल ट्राई टू ब्रिंग सम मोर न्यूज़ लोकेशंस विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम जियोग्राफी एज वेल एज एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. देन वी विल मेक यू मार्क. सो आपकी तरफ से जो 50% ऑलरेडी कवर कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू वेट फॉर दिस मैपिंग क्लासेस. जो 50% कवर होगा उसमें बाकी 50% तो आपकी तरफ से शुरू कर सकता है. ओके, दो तरीका है. एक तो क्लास नोट्स में, टेक्स्ट बुक में जो भी लोकेशन मिलेगा वो मार्क करो. डेली न्यूज़पेपर में जो भी मिलेगा वो मार्क करते रहो. सिंपल है. सो दैट इज हाउ यू हैव टू कवर दिस मैपिंग लोकेशन. और न्यूज़ में जो आता है उसमें इंपॉर्टेंट है नहीं इंपॉर्टेंट है वो कैसे पता करें, ये भी तो ट्रिकी पार्ट है. तो इसके लिए जो यूपीएससी एनालिसिस है वो देख लेना. जो प्रीवियस यूपीएससी क्वेश्चन से जो आया है ना, इफ़ यू गो थ्रू द प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ लास्ट 10 years विच आर रिलेटेड टू मैपिंग पार्ट, तो उससे आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चंस आता है. सो इफ़ यू ट्राई टू रिमेंबर दैट, तो ओवरऑल यू विल बी एबल टू कम टू कंक्लूजन, ठीक है, दिस इज दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, इट वॉज आस्क्ड इन दैट ईयर, सो देर इज अ प्रोबेबिलिटी दिस कैन बी आस्क्ड अगेन. Okay, because there is a particular pattern in which they are asked. Okay, either the locations where these international summits happen, or very important agreement was signed, or a convention happened. Because, like that, जो भी न्यूज़ में आता है यही तो होता है. Fine. चलो, anything else? So let's start with the next part. El Nino and related phenomena. So क्या क्या सुना है एल नीनो के बारे में बताइए पहले. What are the things you have heard about it? ड्रॉट कंडीशंस होता है, ठीक है, और कोरल रीफ, हाँ, कोरल रीफ डिप्लीशन, मतलब
ब्लीचिंग होता है उसकी वजह से. देन it causes increased rainfall in some of the regions. Then drought in Australia. ठीक है. Then forest fires. ठीक है. warm water कहाँ पर होता है? ठीक है, ठीक है. और yes, the fertilizer industry and the fishing industry of Peru, Chile will be impacted. Good. Then साइक्लोन के ऊपर कुछ इम्पैक्ट है? हीट डोम कॉन्सेप्ट सुना है? सुना है हीट डोम? वो भी रिलेटेड है. ट्रिपल डिप सुना है? ये सब आएगा, सबका बदला लेंगे. So let's start with the basics. Walker circulation. Walker circulation. See, El Nino is a phenomena which we refer to the conditions which happen in Pacific Ocean. Okay, basically the conditions which are there in Pacific Ocean. Even though it's in Pacific Ocean, it impacts the global climatic conditions. Okay, globally impact रहेगा इसका. Okay, there is impact at the global level. So this is our Pacific Ocean. This is the western part of Pacific. This is the eastern part of Pacific. Right? So ये जो part है इसको अलग कर लेते हैं. We can see it something like this. We are talking about the Pacific region. ठीक है? This is our Pacific Ocean. Asia, Australia, South America, North America. So during the normal time मतलब एल नीनो कुछ नहीं है. नॉर्मली जब कैसे कंडीशन रहता है, दैट इज व्हाट इज वॉकर सर्कुलेशन. द नॉर्मल कंडीशन इज कॉल्ड एज वॉकर सर्कुलेशन. व्हेन वॉकर सर्कुलेशन इज डिस्टर्ब्ड, इट रिजल्ट्स इन एल नीनो. ठीक है? Normal condition is called as Walker circulation. When Walker circulation is disturbed, it results in El Nino. First of all, what is Walker circulation? So this is equator. यहाँ पर जो दिया है, this is equator. So near to the equator, the temperature remains high. Why? Direct sunlight है, high heating है ना, high temperature. So usually near to the equator, the temperature should remain high. And trade winds merge from both the sides of the equator. Right? This is the normal condition. Trade winds तो होना चाहिए. So there is southern belt of trade wind and there is northern belt of trade wind. Okay, this is southern belt of trade winds and northern belt of trade wind. However, in the case of Pacific Ocean, the zone where the trade wind belt is meeting, the trade winds of northern and southern hemisphere is meeting. That is what we call it as ITCZ, Intertropical Convergence Zone. It rarely lies exactly over the equator. Rather, it lies slightly above the equator. थोड़ा सा ऊपर रहता है. During the summer, as well as during the winter. Winter में भी कम नीचे नहीं आएगा. So usually in other parts of the world, during the winter, ITCZ shifts south. थोड़ा सा साउथ आ जाता है, बट यहां पर नहीं होता है. ओके, यहां पर तो होता ही नहीं है. वाई? देयर इज नॉट मच ऑफ लैंड मास हियर. इफ देयर इज अ लैंड मास गेट हीटेड अप, इट क्रिएट्स द लो प्रेशर दैट विल पुल द ITCZ डाउनवर्ड्स. इट इज द लैंड मास विच इज पुलिंग द ITCZ डाउनवर्ड्स. देखो ऑस्ट्रेलिया यहां पर हीट अप होगा, यहां पर ITCZ इस तरफ यहां तक आता है. Since there is not much of land mass at all, there is no differential heating of land and ocean. It always remains uniform and it almost remains near to the equator only, and that too slightly above the equator. So because of which there is a strong trade wind experienced always near to the equatorial region of Pacific Ocean. The equatorial region experiences a strong trade winds always. अगर ITCZ शिफ्ट हो गया तो क्या होगा? ट्रेड विंड थोड़ा सा वीक होता है, बिकॉज ITCZ इज द जोन ऑफ calm condition.
बहुत नीचे से ही ये जो ट्रेड विंड मिल जाएगा, यहां से आके मिल जाएगा. सो ओवरऑल जहां पर ITZ रहता है, इट रिमेन्स काम कंडीशन. दैट इज वाई टुवर्ड्स द साउथ ऑफ दिस इक्वेटर, towards the south of the equator in Pacific Ocean, the trade winds are always strong because ITZ never shifts downwards. Trade winds to strong rahega. That is the initiating fact here. There is a strong trade winds, and these trade winds, if you see the coast of America, यहाँ पर दो country है, एक है पेरू, okay, दूसरा है चिली. Okay, so सबसे इक्वेटर के पास में इक्वेडोर है, उसके नीचे है पेरू, and then Chile. So we are going to talk about Peru and Chile a lot. याद रखो. So on the coast of Peru and Chile, a strong trade wind is experienced, and the strong trade wind is continuously coming from land to sea. It is continuously offshore, and there is no change in the direction. There is no change in the intensity. ये पूरा साल भर ऐसे ही रहता है, right? Because ITZ is never coming down. ये तो there is nobody to disturb them. जिसके वजह से यहां पर है एक और हमारा कोल्ड ओशन करंट. व्हाट इज दिस कोल्ड ओशन करंट? Humboldt or Peru current. Now you mix both the cold ocean current and the offshore trade winds. Okay, desertification होगा, उसके ये सब तो पता है. And but the impact of this is this cold water which is continuously coming in this direction gets spread away from the coast because of these offshore trade winds which will push this water. ये cold water normally coast के पास में होना चाहिए, ऐसे फैल जाता है ये. The cold water gets distributed over a large area pushed by the offshore trade winds. Offshore trade winds continuously push it away from the coast. जैसे जैसे this cold water is getting pushed away from the coast, more upwelling happens over there. There is a strong upwelling. More cold water comes up and more is pushed away from the coast. This entire region becomes very, very cold because of this situation. Okay, what is the situation? The entire cold water is continuously generated and is continuously pushed away by the strong trade winds. This entire region is experiencing low temperatures of water. Low temperature है तो high pressure रहेगा. Okay, low pressure, low temperature, high pressure. ठीक है, low temperature and high pressure. This entire region experiences cold waters. A strong trade winds which push the cold waters away continuously causes these cold water to spread away, and there is a drop in the temperature, creating high pressure condition. So but these trade winds are active everywhere. यहां पर भी active है, यहां पर भी active है. So gradually what happens to this water which is continuously moving away? It continuously gets pushed along the equator and moves towards the western part. This water which is upwelling and moving towards the east, जहां तक इस एरिया है वहां तक कोल्ड रहेगा, बट इस तरफ आते 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 थोड़ा सा वार्म अप होते जाएगा. Because it is moving along the equator hot temperature zone, and there is a strong trade wind belt which is pushing this entire water in this direction, which will push these cold waters continuously towards the western part of Pacific Ocean. By the time these waters reach the western part of Pacific Ocean, it would have got heated up sufficiently. Here there is no upwelling, there is no cold current. The water gets heated up, there is a strong evaporation. Strong evaporation causes the strong convection, and there is a cloud formation, huge cloud formation, and then precipitation. However, here the low temperature and high pressure will not cause any kind of convection. The air rarely rises upwards. There is no convection, there is no cloud formation, no precipitation. It is totally dry condition. So in normal cases, on the western Pacific Ocean, there is a strong convection, cloud formation, precipitation. Temperature is high, pressure is low. On the western Pacific Ocean, there is a high temperature and low pressure. On the eastern Pacific Ocean, there is a low temperature and high pressure. High temperature and low pressure causes convection, cloud formation, precipitation, whereas low temperature and high pressure causes subsidence of air.
The rising air gets divided into two parts. A part of it moves towards the east and it starts to subside in those regions wherever there is a high pressure belt. जहां पर कन्वेक्शन नहीं हुआ है तो वहां पर जगह मिल गया, it will start to come down. है ना? This rising air will move toward the eastern part and starts to subside here. As the air subsides down, it becomes part of the trade wind, where along with the trade wind there is also movement of water. On the surface component, it is a mix of both wind and water, whereas the atmospheric component is totally wind, which is mixed with the moisture content, water vapor. है ना? This cyclical movement is called as Walker circulation. The winds are continuously moving from east to west. Here it is getting heated up, the water is getting heated up. Along with the wind, there is also movement of water here. The water is getting heated up, it rises through convection, causes cloud formation, precipitation, and air moves towards the east. There it descends down, again moves towards the west, and this continuous cycle goes on. ये continuously चलता है. This normal circulation is called as Walker circulation, discovered by Walker, इसलिए Walker circulation है. ठीक है? So what happens in normal condition? On the eastern side, there is a low temperature, high pressure, which suppress the precipitation, creating drought condition. That is why Atacama Desert is one of the most driest desert. ITS desert कभी नीचे नहीं आएगा. Trade winds बहुत strong है, offshore है. It always push the water away. There is a strong strong upwelling of cold water, which will suppress the precipitation, creating dry condition. However, on the western side, there is a good condition here. Normally, particularly near to the northern part of Australia and this part of the Southeast Asia, ये सारे region है ना, including India, they are under the influence of this low pressure. जहाँ पर low pressure है, high precipitation होगा, बारिश अच्छे से होगा. There is good precipitation here. So Walker circulation brings good precipitation in the western part and no precipitation in the eastern part. ठीक है? This is what we call it as the Walker circulation. So any doubts about Walker circulation other than El Nino, La Nina बताइए. Clear है? यहाँ तक clear है? Okay, the same thing is explained here. Okay, let's see this. That is a pattern. In order to understand the development of these two conditions, El Nino and La Nina, let's take a look at what the normal. In this animation, we're going to look at the cycle of El Nino and La Nina. That is a pattern that occurs regularly in the Pacific Ocean and has a huge effect on climate and rainfall and other kinds of activity all around much of the world, especially around the Pacific Ocean. Now, in order to understand the development of these two conditions, El Nino and La Nina, let's take a look at what the normal situation is in the Pacific Ocean. Normally what happens is that you can see those reddish arrows there. You get these very strong southeast trade winds blowing from east to west across the Pacific. By the way, this is North America over here, South America. This red line represents the equator. This is Australia and New Guinea, and Asia would be out of view on this side. So as these trade winds blow, the air eventually rises in low pressure systems and creates a lot of rainfall over on the west side of the Pacific, over near Indonesia. And as that water, and what happens is a circulation cell called the Walker cell is set up here that it
basically runs like that. Well, the effect of that is to push the water away from South America. Ocean surface currents are pushed this direction, and that takes warm water and pulls it away to the west, and it lets cold water come up from below. Here we have warm water, the thermocline, the big change from warm to cold, and then cold water down underneath. And as that wind blows and pulls the water. See, here you can see the cold water. So normally तो यहाँ पर देखो, this is the warm layer, upper layer is warm, then thermocline and the bottom layer, है ना, epilimnion, thermocline, hypolimnia. यहाँ पर epilimnion बहुत thin है because upwelling, and that upwelling जो continuously हो रहा है, that is continuously spread away from the coast by the trade winds. The trade winds are continuously spreading away, and as this water moves away from this region, gradually आते आते heat up होगा. Then the temperature rises. There is a high temperature, low pressure, strong convection, cloud formation, precipitation. Then it moves towards the east. There it subsides because there is a high pressure, and then again moves towards the west. Continuously ऐसे चलेगा. So that is continuously bringing the water from east to west and causing the precipitation here. Cold upwelling water near South America. Meanwhile, a lot of very warm water accumulates over here in the western Pacific. It's called the West Pacific Warm Water Pool, because that water takes a long trip along the equator and it gets very warm in this area. So this is a part of the world that's very wet and warm and rainy, whereas this part of the world tends to be cool and drier in general. Now, the whole reason this can happen is because these strong trade winds push this water from east to west. But if those trade winds break down, what can happen is all this warm water on this side of the Pacific Ocean can kind of slosh back across and pile up on this side. And that's really what happens during an El Nino. चलो एल नीनो के बारे में बात करते हैं. So before that you write about this. Okay, first one, Walker circulation. So in the bracket, normal condition. Okay, point wise लिखते जाओ. First point, near South American coast, winds blow offshore. Winds blow offshore and blows the surface water westward. Blows the surface water westward away from continents. Away from continents. Next point. This results in upwelling This results in upwelling of cold water from the bottom, and the air above this cold water is stabilized and convection is suppressed. Convection is suppressed. Next point. The water flows westward
the water flows westward as southeast trade winds blow towards western Pacific region. Next point. It is heated and rises. Causing convection, cloud formation, and precipitation. Next point. The rising air flow eastwards. The rising air flow eastwards in the upper troposphere and descends down along eastern Pacific क्या लिखा था? It flows eastward to descend down along the eastern Pacific and completes the cell. Next point. This result in high pressure and low temperature. High pressure and low temperature along eastern Pacific low pressure and high temperature along western Pacific. Next point. The resulting convective cell is called as Walker circulation. Next point. In this condition, eastern Pacific coast experiences drought with western Pacific having good rainfall. ठीक है, that is Walker circulation. तो अभी लेके आते हैं हमारा एल नीनो. So what do you mean by El Nino? Literal meaning of El Nino. Literally, what does the word say? It's called as boy child,
small boy or Christ child. Okay, it's also called as Christ child because it happens before Christmas. Okay, Christmas के पहले शुरू हो जाता है but clearly दिखता है during that time. ठीक है. This is normal condition. Normal condition is what we call it as Walker circulation. अगर Walker circulation है, याद रखो हमेशा ऐसे इस डायरेक्शन में जाएगा, clockwise direction, right? This is clockwise direction, right? The overall circulation. इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था जो सबसे पहले मैंने बताया? ITCZ. ITCZ. So ITCZ in Pacific Ocean usually remains above the equator even during the summer. Sorry, even during the winter. So once in a while, once in 7 or 8 years, we observe that ITCZ shifts slightly down. We are not sure what is the reason behind this. Okay, we are not clear what causes this shifting down of ITCZ. नॉर्मली इक्वेटर के ऊपर रहता है. वंस इन 7 to 8 years ITCZ shifts down. ओके, ये सारा कहानी चेंज कर देगा. What happens? As ITCZ shifts down, the entire trade wind belt which was existing here, now it is weakened. It is no more existing here. It will weaken the trade wind belt, particularly the southern trade wind belt. Okay, as the ITZ shifts down, the southern trade wind belt is weakened. Once the southern trade wind belt is weakened, the overall upwelling which is happening is also suppressed. How? The earlier the winds were very strong from land to ocean, the offshore trade winds which were continuously pushing this cold water away from the coast and it was spreading away. As this water comes away, वहां से और पानी ऊपर आ रहा था. As the water is pushed away, more water comes from the bottom. That is what is called as upwelling, right? ये इस तरफ आएगा, ये ऊपर आता ही रहेगा. So now the trade wind is weakened. Trade wind पूरा weaken हो गया है. And there is no upwelling. There is a very minute, small cold ocean current. Very, very small cold ocean current is there and that is pushed more towards the coastal region. जो बेंगुला करंट है ना, it becomes a very narrow current and is pushed towards the coastal region. So what happens to this entire region? The cold water which was earlier getting pushed away from this region, now it will start to flow back. And this entire region starts to become warm up. It will start to get heated up. Why? Because the upwelling is suppressed. There is no cold water and whatever the water which is there near the surface, it is not moving away also. As this water is not moving away, there is no upwelling, this starts to get heated up. Sunlight है. Okay, पहले भी था, sunlight पहले भी था, but it was continuously moving away and the bottom से cold water continuously ऊपर आ रहा था. So that keep this entire water cold. So here it is not, there is no upwelling and there is no moving away. This water becomes stagnant and starts to get heated up. This entire water, entire region becomes hot in terms of temperature. And there is no flow of water from here to there. Okay, पहले इस तरफ पुश हो रहा था ना क्योंकि ट्रेड विंड ज्यादा था. अभी ट्रेड विंड वीकन हो गया. There is no pushing of water away. Trade winds are weakened. Because of this, there is a rise in the temperature. Rise in the temperature causes low pressure. Rise in the temperature causes low pressure, and that also triggers convection. It triggers convection. This rising air now moves towards the eastern part. Now it starts to descend down. Here it starts to descend down. Because earlier there was a convection. This convection was fueled by the movement of water from east to west. Now there is no movement of water from east to west. There is not much of convection happening. So यहाँ से there is a strong convection. This moving air moves towards the western part and starts to subside here. यहाँ से ऊपर से नीचे आएगा. It will push the water away. The water will start to move in this direction. Subsidence create high pressure.
Earlier the continuous flow of water along the equator would have got it heated up, तो इसलिए comparatively यहां पर जितना टेम्परेचर होना चाहिए था उससे ज्यादा था. Now the water is not getting heated up much. ज्यादा हीट तो नहीं हो रहे, नॉर्मल टेम्परेचर ही है. ऐसा नहीं कि यहां पर कोल्ड करंट आ जाएगा, यहां पर कोल्ड करंट नहीं आएगा. Remember, there is no cold current here. It is just the normal temperature. But compared to this, it appears the temperature is lower. Here there is a continuous heating up of the water. Here there is a subsidence of air. There is not much of convection, no cloud formation, no precipitation. The winds are descending down. There is a high pressure and slightly lower temperature compared to this. You cannot completely reverse the condition. तब यहां पर genuinely low temperature था because of upwelling. यहां पर low temperature है. It is just because there is not much of heating up and there is in comparison to the eastern part, this is slightly lower in temperature. इसलिए उसको lower temperature बोलते हैं बस. But there is a high pressure. This is important here. There is a low pressure here. There is a high pressure here. High pressure is caused by the subsidence of air. Now it pushes the water in this direction. The air is moving in this direction. The current is opposite now. The water and the air current moves in this direction. Here it gets heated up. It rises, causes convection, cloud formation, precipitation, and then this moves towards the west, and there it subsides. Okay, it subsides along the western part. This is the entire reversal of Walker circulation. The reversal of Walker circulation is called as El Nino. El Nino. So this is Walker circulation. This is El Nino. Okay? So what is happening in El Nino? The surface temperatures are higher and there is a low pressure. Here the surface temperatures are lower compared to the eastern side, but however there is a strong high pressure. Here there is a convection, cloud formation, precipitation. Here there is a subsidence. Subsidence means no cloud formation, no precipitation, totally dry condition. Okay, here the rising air is moving towards the west. There it is descending down. Now it is moving towards the east. The entire Walker circulation is reversed between the eastern and western Pacific Ocean. So now, यहाँ पर earlier there was no precipitation at all. पूरा के पूरा dry था. अभी यहाँ पर precipitation आएगा. Once in 7 to 8 years it receives precipitation. That is during El Nino. And the shifting of ITZ towards the south is usually observed between by September, October. अक्टूबर एंड में ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि वहां पर समर तब बिगिन होता है ना. बाय सितंबर अक्टूबर वी स्टार्ट टू ऑब्जर्व. बाय द एंड ऑफ नवंबर डिसंबर द ट्रेड विंड्स आर कंप्लीटली वीकेंड. दैट इज व्हेन वी स्टार्ट टू ऑब्जर्व ए वार्म ओशन करंट हियर. नॉट एग्जैक्टली करंट, द वाटर बिकम्स टू वार्म एंड दैट वार्म वाटर is referred to as El Nino. Okay, which comes around Christmas time. ठीक है. And once this condition is set, यहां पर तो कन्वेक्शन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, फिर यहां पर बारिश होगा. यहां पर जो नॉर्मली हो रहा था ये बंद हो जाएगा. हियर देयर इज ए हाई प्रेशर सेल, हियर देयर इज ए subsidence, here there is a dry conditions. Okay, because of lack of precipitation it creates dry condition. The entire cell is reversed, which is what we call it as El Nino. इसको बोलते El Nino. Fine. Okay, now see this. So this is Walker circulation, right? And what will happen is that water, that warm water, the trade wind and pile up on this side of the pool and drier in general. Now, the whole reason this can happen is because these strong trade winds push this water from east to west. But if those trade winds break down, what can happen is all this warm water on this side of the Pacific Ocean can kind of slosh back across and pile up on this side. And that's really what happens during an El Nino. What happens during El Nino is the trade winds actually weaken and break down. It's called the southern oscillation. Okay, what is the triggering factor? Weakening of trade winds, and that is usually caused by shifting of ITZ south. We are not sure what causes the shifting of ITZ. Okay, so overall phenomena of El Nino is something very
वेरी कॉम्प्लेक्स. जितना हमें अभी तक जितना पता है इसके ऊपर हम ये सारा theory बनाए. And what will happen is that water, that warm water, there's nothing to hold it back anymore, and it flows across the Pacific and kind of piles up over on this side of the Pacific, going all the way up toward California, all the way down to Peru and Chile. And we don't get upwelling anymore over here, and the atmospheric pressure patterns switch. And so what happens now is that warm water fuels rain and storms, and the trade winds are actually reversed in direction. And this part of the ocean now becomes the rainy, stormy side of the ocean. And so during an El Nino, we typically have very high rain, lots of storms and flooding over on this side of the Pacific from California on down to South America. Now, what usually happens within a year or so after the El Nino is that things kind of, it's like the pendulum swings back the other way. ठीक है, that is El Nino. El Nino में क्या हुआ, पूरा उल्टा हो गया. So here there is no cold water upwelling. The warm water is the water is continuously heated up. Then there is a convection, cloud formation, precipitation. This rising edge starts to descend down, creating a high pressure here. There is a high pressure, low pressure. The winds are moving, and that push the water in that particular direction. पूरा reverse हो गया. Okay, earlier Walker circulation का जो direction था उसको पूरा reverse कर दिया. So that is what is reversal of Walker circulation is El Nino. Okay, since this is happening slightly towards the south of equator, equator का थोड़ा सा south जगह में होता है ना, so that is why it is called as the southern oscillation. Oscillation is oscillation of the earlier condition. पहले जो condition था पूरा exactly उल्टा हो गया. Earlier it was moving in this direction, that is clockwise. Now it is going in counterclockwise. Okay, पूरा opposite condition में जा रहा है ना, that is counterclockwise. The oscillation of the earlier condition is southern oscillation. Okay, together it is called as El Nino southern oscillation, ENSO, ENSO. Okay, El Nino southern oscillation. This entire phenomena is called as El Nino southern oscillation. So what is the impact of this? It causes precipitation in desert region. जहां पर बारिश होता ही नहीं है वहां पर बारिश होगा. यहां पर बारिश जो रेगुलरली हो रहा था यहां पर ड्राई हो जाएगा. दोनों के लिए नुकसान है. Okay, even for them it is bad because it will destroy their fishing industry. Okay, how precipitation will destroy the fishing industry? It is not the precipitation, it is the upwelling. जो upwelling जो बंद हो गया ना जिसकी वजह से fishing industry खत्म हो जाएगा. Okay, there is a large scale fish and there is no upwelling, food suddenly stops and the fish start to die. And that this dying and decaying fish releases the toxic chemicals, elements, and ये सारा पूरा पानी को black color कर देता है. It makes it totally dark, black, foul smelling. There is no fish, there is no food, there is no birds. All the birds will migrate away. The fishing industry collapses, the fertilizer industry collapses on the eastern side. कि जो भी बारिश आएगा उससे कोई एग्रीकल्चर नहीं कर पाएगा क्योंकि उनका कोई एग्रीकल्चर लैंड ही डेवलप नहीं है. द पीपल आर नॉट well equipped for agriculture, so they will not be able to make use of this for agriculture. However, on the eastern side they need agriculture because these are the countries which are dependent on agriculture. Southeast Asia, India, South Asia, they are all उनके लिए चाहिए low pressure चाहिए यहाँ पर. But however, the high pressure disturbs the rain pattern over there. Okay, how it would disturb the rain pattern here? Okay, can you see what is happening in El Nino? In El Nino there is a high pressure around here. यहां पर हाई प्रेशर होता है. यहां पर हाई प्रेशर है तो इंडिया में क्यों बारिश कम होगा? देखो इंडिया में जो बारिश होता है ना, इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून विच कम्स फ्रॉम हियर टू देयर. एंड यहां पर चाहिए हमें लो प्रेशर. इंडिया में चाहिए लो प्रेशर, बट लो प्रेशर के बिल्कुल बगल में ही हाई प्रेशर है तो इसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा. मान लो यहां पर भी लो प्रेशर है, यहां पर भी लो प्रेशर, ओवरऑल विंड डायरेक्शन इज मोर स्ट्रॉन्गर. द विंड मूवमेंट इज मोर स्ट्रॉन्गर इन दिस डायरेक्शन. बट यहां पर हाई प्रेशर है जिसकी वजह से इसका इंपैक्ट कम हो जाएगा. यहां पर इतना आसपास में लो प्रेशर इतना नहीं हो सकता है. ऑफ कोर्स दिस विल इंपैक्ट द प्रेशर हियर. इसका द इंटेंसिटी ऑफ लो प्रेशर इज रिड्यूस्ड हियर. इतना ज्यादा लो नहीं होगा जिसकी वजह से द विंड्स इंटेंसिटी विल ऑल्सो डिक्रीज. इट विल इंपैक्ट द इंडियन मॉनसून. एंड ऑस्ट्रेलिया तो बहुत पास में और ज्यादा इंपैक्ट हो जाएगा. This entire region gets impacted due to the high pressure cell here. Fine. यहाँ पर भी issue है, वहाँ पर भी issue है. So that is what is El Nino. So first of all, I told you we don't know the reason behind the shifting of ITS is that in the same way we also don't know why it will go back. After 1 or 2 years it will go back. है ना? So बिना बुला के आया, so बिना बोल के भी जाएगा.
So it'll just go back. The ITZ will shift north. As the ITZ shifts north, the trade winds become stronger. As the trade winds become stronger, the water starts to move towards the west and the normal condition will come back. Okay, El Nino usually it will be there for 1 or 2 years. Okay, after 1 or 2 years, the normal trade winds will become stronger and normal trade winds stronger होने से फिर दोबारा वापस आ जाएगा Walker circulation. Okay, again it creates dry condition here and the moving water becomes heated up and it rises here, causes precipitation, cloud formation. ये सब तो यहाँ पर हो जाएगा. So the Walker circulation is established back. So the strengthening of trade winds is also can also be called as the strengthening of Hadley cell. Can we call so? It is the Hadley cell, right, which is causing the trade wind. ऊपर से जाके नीचे आएगा ना. अगर Hadley cell strong हो गया तो trade winds भी strong होगा. So that is what we observe actually. After the onset of El Nino, after 1 or 2 years, we observe that this Hadley cell becomes stronger and the trade winds become stronger. And that is also, of course, due to the shifting of this ITZ towards the north. Okay, this is about El Nino. Any doubts here? Okay, write about this और discuss करने बात करते हैं. First point. Once in 7 to 8 years, once in 7 to 8 years, by October, November, the ITCZ moves too much south of equator resulting in weakening of trade winds. Next point. Weakening of trade winds reduces the upwelling along the coast Next point. The warm tropical surface water along the eastern Pacific is not moving away, rather it starts to flow back. Causing reduction in upwelling. Next point. This results in warm surface water off the coast, off the coast
of South and Central America, of South and Central America, which is called as El Nino. It's called as El Nino. Next point. The appearance of El Nino causes air pressure to drop over Eastern Pacific and rise over Western Pacific. Rise over Western Pacific. Next point. This seesaw variation of air pressure, this seesaw variation of air pressure is called as ENSO, ENSO, that is El Nino Southern Oscillation. El Nino Southern Oscillation. Next point. It causes heavy precipitation along Eastern Pacific and drought-like condition along Western Pacific. Next point. After 1 or 2 years, the enhanced Hadley circulation strengthens the trade winds ITZ shifts north and increases upwelling bringing back normal condition. ठीक है, it is El Nino. Because of air subsidence. But even if the land is heating up, even if the temperature is rising along the land, subsiding air जहां पर रहता है वहां पर तो हाई प्रेशर ही रहेगा, है ना? Due to the air subsidence, it experiences high pressure. There is no convection basically. The last time it was 2014-15, I guess 14-15. शायद 19 भी हुआ था, 19 या 18 में भी हुआ था शायद. ठीक है, बात करते हैं इसका. ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसका इम्पैक्ट्स और है और बात करना है. ठीक है, सो कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है.
So we had Walker circulation. Now the reversal of Walker circulation is El Nino. No, there is no downwelling. There is just normal condition. Yes, there is just a reduction in the upwelling. There is no downwelling as such. There is a warm water near to the top. The water gets heated up. Okay, इसीलिए उस वीडियो में if you see water का जो direction है, water का overall level है वो observe करो. During El Nino, you can see there is warm water. So there also there is warm water. But during normal condition there is no warm water over there. यहाँ पर तो cold water आ गया because of upwelling. This is what is upwelling, है ना? The cold water is rising upwards. So here if you see El Nino, during El Nino, so it is totally warm. Normally cold रहता है, जब warm हो जाएगा that is what is El Nino. बस. No, it is not like the entire ocean currents are reversed. There is just more stronger eastern flow. It is just the stronger eastern flow. It's not like the entire currents are reversed. पूरा करंट तो रिवर्स नहीं होगा. जो नॉर्मल करंट से हमारा नॉर्थ इक्वेटोरियल साउथ इक्वेटोरियल करंट तो वो भी रहेगा, बट देयर इज अ स्ट्रॉन्गर ईस्टर्न फ्लो. नॉर्मल कंडीशन देयर इज अ स्ट्रॉन्गर वेस्टर्न फ्लो. ठीक है. एनीथिंग एल्स? Yes, there is also another question. Why El Nino happened only in Pacific Ocean? Is it happening in other oceans also? So, why it happens only here? Because of the overall setup which is here. बाकी दूसरी oceans में ऐसे तो setup नहीं है. We need a wide ocean where there is not much of land mass in the southern hemisphere, and where there is a strong cold ocean current. ये सब चीजें तो बस यहीं पे है, दूसरी ocean में नहीं है. But the overall pressure condition which varies in the Pacific Ocean also causes the subsequent variation in the pressure condition in other oceans also, because it is a complete circulation. Okay, this overall circulation is all related. देखो, this is natural condition, natural normal Walker circulation में क्या हो रहा है? There is subsidence here and there is convection here. So here it is moving. A part of it is also moving here. So it is creating subsidence in this part of Arabian Sea. Here it is again moving back, here it is coming up. अगर ये इस तरफ आ रहा है तो यहाँ पर फिर अगेन दोबारा कन्वेक्शन होगा. द साइज ऑफ द सेल्स मे नॉट बी द सेम, ये जरूरी नहीं है. दैट डिपेंड्स अपॉन द लोकल हीटिंग एंड कूलिंग कंडीशंस. बट देयर इज ए कंटिन्यूअस राइजिंग एंड सब्सिडेंस ऑफ एयर. ऐसे कंटिन्यूअसली तो चलेगा, देखो ऐसे कंटिन्यूअसली तो चलेगा. सो यहां पर एक बार ये रिवर्स हो गया, बाकी जगह में भी रिवर्स हो जाएगा. द सर्कुलेशन विच इज गेटिंग रिवर्स्ड इन in Pacific Ocean also causes the subsequent reversal of conditions in other oceans also. दूसरे oceans का भी impact हो जाएगा जिसके वजह से, but it is initiated in Pacific Ocean. Pacific Ocean में जो condition reverse होता है उसकी वजह से दूसरे oceans में reverse होता है. ठीक है. So definitely it will impact the other oceans, but it will not happen in the same way as it is happening in Pacific Ocean. So it will be there for throughout the year. It will be the impact of the cold ocean current, the presence of the warm ocean current along the eastern coast of Peru and Chile, along the western coast of Peru and Chile, that will be there throughout the year. As long as that warm ocean current is there, the warm water is there, that is what we call it as El Nino. ऐसा नहीं कि बस वहां पर समर में ही एक्सपीरियंस होगा. It will be there 1 or 2 years तक ये कंडीशन कंटिन्यूसली रहेगा, फिर वो वीकन हो जाएगा. ठीक है. Yes, definitely. Indian monsoon is fueled by this low pressure which develops over India. है ना. तो इंडियन मानसून के लिए ये चाहिए यहां पर सबसे लो प्रेशर. अगर यहां पर हाई प्रेशर आ गया तो ये लो प्रेशर, दिस लो प्रेशर विल आल्सो गेट इंपैक्टेड. है ना. यहां पर लो प्रेशर है, यहां पर भी लो प्रेशर, तब पूरा मिलके बड़ा सा इंटेंस लो प्रेशर बनता है. देयर इज ए स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन ऑफ विंड्स. एक जगह में बगल में ही हाई प्रेशर है, यहां पर लो प्रेशर है, तो वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहेगा. द इंटेंसिटी ऑफ विंड्स विल आल्सो बी नॉट वेरी स्ट्रांग. It will definitely impact India's monsoon. To what extent, we'll see that. Okay, to what extent, we'll see that. Anything else? Okay. So third part, La Nina.
So La Nina means girl child or little girl. वहां पर little boy, it is little girl or girl child. So what is La Nina? See, whenever there is a Walker circulation and the Walker circulation is disturbed, the conditions are reversed. That is what is El Nino. From Walker circulation it becomes El Nino. From El Nino it will come back to Walker circulation. But when it comes back to Walker circulation, it will not stop at Walker circulation. और नीचे चला जाएगा. Okay, like human beings. So हम भी ऐसे ही करते हैं. When we get angry on someone, है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, है ना, फिर पता चलेगा यार बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लिया, इतना तो नहीं था, फिर बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, है ना. In the same way, nature is also human in emotions maybe. So what is happening in El Nino? El Nino में क्या हो रहा है? So in El Nino condition there is the precipitation here and there is a drought condition here. दोनों के लिए नुकसान है ना, दोनों के लिए नुकसान है. यहाँ पर बारिश खत्म हो गया, यहाँ पर फिशिंग इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री सब खत्म हो गया. So it will come back to normal condition. Normal condition is when there is a convection here, there is a precipitation. Sorry, there is a convection and precipitation here. There is a subsidence here. It will not stop here. It will cause very high convection, very strong cloud formation and very heavy precipitation and a very heavy subsidence. बहुत ज्यादा subsidence हो जाएगा. So then what is La Nina? It is the intensified Walker circulation. Walker circulation को ही बहुत intensify कर लिया. Normal Walker circulation, if you see, there is a convection and there is a subsidence. So La Nina is very strong convection, very strong subsidence. So normal Walker circulation, चलो इसमें दिखाता हूं. Okay, this is Walker circulation. So there is a low pressure here, there is a high pressure here. This is Walker circulation. El Nino, this is high pressure, this is low pressure. इससे दोबारा Walker ही होगा. From here, from El Nino, it becomes Walker circulation, but it will not stop over there. There is a very low pressure and very high pressure. When there is a very high pressure, मतलब उसका मतलब है यहां पर पानी बहुत ठंडा हो गया. The water is very cold. Here it is very warm. There is a strong difference. Okay, there is a strong convection, strong cloud formation, बहुत ज़्यादा precipitation होगा, and it moves towards the east. It subsides down because of the very high pressure, and there is a strong subsidence of air, and this subsiding air also moves towards the west very strongly. It causes a very strong movement of water. Basically, it is intensified version of Walker circulation. एल नीनो के टाइम में तो यहां पर पूरा ड्रॉट हो जाएगा. नॉर्मल टाइम में तो बारिश होगा, यहां पर तो फ्लड्स हो जाएगा. La Nina causes very heavy precipitation around India as well as Australia, this entire region, because of very low pressure. बहुत ज्यादा लो प्रेशर है. यहां पर हाई प्रेशर है तो क्या हुआ, विंड्स थोड़ा सा वीक हो गया. यहां पर लो प्रेशर है तो विंड्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. There is a strong monsoon, strong precipitation, very heavy rainfall and flooding. पूरा के पूरा फ्लड हो जाएगा. प्रेजेंटली वी आर इन ला नीना. ओके, अभी हम ला नीना में हैं एंड दिस इज द थर्ड ईयर ऑफ ला नीना. यूजुअली इतना देर तक तो ला नीना नहीं होता है. आफ्टर एल नीनो 1 or 2 years तक एल नीनो रहेगा, फिर 1-2 साल के लिए नॉर्मल वॉकर सर्कुलेशन रहेगा, फिर 1-2 साल के लिए ला नीना रहेगा, फिर दोबारा वॉकर आएगा, फिर दोबारा एल नीनो आएगा. दिस इज द ओवरऑल साइकिल. बट लास्ट ला नीना 3 साल से वही कंटिन्यू हो रहा है. ओके, ला नीना आया था 3 साल पहले, फिर उसके बाद में 3 साल से ऐसे ही कंटिन्यू हो रहा है. दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज द ट्रिपल डिप. ओके, ट्रिपल डिप रेफरिंग टू द वेरी लो टेम्परेचर्स इन द ईस्टर्न पार्ट, है ना, द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम, जिसके वजह से यहां पर बहुत ज्यादा बारिश हुई. इस बार भी थोड़ा बहुत एक्सेस प्रेसिपिटेशन हुआ है मॉनसून में. ओके, अच्छी बात है ना, गुड फॉर इंडिया. सो बट स्टिल इट कॉज सम फ्लडिंग कंडीशन इन सम ऑफ द रीजन्स, है ना. पाकिस्तान में फ्लड हो गया तो इंडिया में भी कुछ जगह में फ्लड हो गया, तो ये सारा चीजें. सो बिकॉज ऑफ दिस इज व्हाट इज ट्रिपल डिप. इट इज जस्ट रेफरिंग टू द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर ऑफ ला नीना, विच यूजुअली विल नॉट बी देयर. यूजुअली नहीं होते, इस बार हो गया.
कारण क्या हो सकता है, बिकॉज अभी तक तो वी आर नॉट श्योर कि पहले बात है कि क्यों हो रही है, ये सब भी यही पता नहीं है. सो कारण ये हो सकता है कि द ग्लोबल वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस. Okay, definitely we can link it with the global warming, climate change. The global variation in the temperature and pressure condition causes this erratic behavior of monsoon, erratic behavior of El Nino. The frequency of El Nino is also increasing, okay, due to the variation which is happening. बहुत ज़्यादा heat up होगा, बहुत ज़्यादा cool down होगा. So this kind of variation is all can be attributed to the global warming, but not yet proven. Okay, completely officially prove नहीं हुआ है. This is what we call it as the triple dip. So is that clear? That is because of monsoon. Monsoon का variation ऐसा ही है. There is no uniformity. And it's not only El Nino and La Nina which is impacting India's monsoon. There are few more factors. Multiple factors are involved. Combined factor है. But of course अगर El Nino है तो उसका role थोड़ा ज़्यादा रहता है. It can be balanced by other factors. अगर लानिना है तो उसका रोल ज्यादा होता है, बट इट कैन ऑल्सो बी बैलेंस्ड बाय अदर फैक्टर्स. वो अदर फैक्टर्स है वो सब देखते हैं हम. इट इज नॉट जस्ट ए सिंगल फैक्टर. ठीक है. एनीथिंग एल्स? राइट अबाउट दिस लानिना. लानिना फर्स्ट पॉइंट. एल नीनो is usually followed by La Nina. El Nino is usually followed by La Nina. Next point. It is the intensified high pressure conditions and cold temperatures along eastern Pacific and lower low pressure and high temperature along western Pacific. Next point. This causes very high precipitation. In India and Australia. Resulting in floods. And very dry conditions along Peru and Chile. ठीक है. चलो, so let's take a break. ब्रेक के टाइम में एक बार इसको रिवाइज कर लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो फर्दर कॉन्सेप्ट्स इसी के ऊपर होगा. ठीक है. नॉर्मल फिशिंग जितना होता है थोड़ा सा ज़्यादा अपवेलिंग होगा, ज़्यादा फिशिंग हो सकता है. हाँ. कैन वी प्रिडिक्ट एल नीनो एंड ला नीना? इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट व्हेन इट विल कम अगेन, कब आएगा, बट आ रहे नहीं आ रहे वो थोड़ा सा पता चल जाएगा. बाय ऑब्जर्विंग द वाटर टेम्परेचर अक्रॉस द वेस्टर्न पैसिफिक,
सॉरी द ईस्टर्न पैसिफिक एंड वेस्टर्न पैसिफिक दोनों का वाटर एंड प्रेशर कंडीशन हम ऑब्जर्व कर लिया तो थोड़ा बहुत पता चल जाएगा. Okay, we can say whether this is El Nino year or La Nina year or not. But next year आएगा, उसके next year आएगा, ये तो predict नहीं कर सकते. ठीक है? So let's continue after the break. Yeah. इफेक्ट्स ऑफ एल नीनो. ऑस्ट्रेलिया में इतना डेजर्ट्स क्यों है? सेम दूसरी जगह में क्यों है? इसीलिए क्या क्या है कारण? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ऑफशोर ट्रेड विंड्स एंड कोल्ड ओशन करंट्स. द सेम रीजंस अप्लाई हियर ऑल्सो. ठीक है? इज देयर एनी टेक्निक? Techniques to monitoring. We can monitor the sea surface temperature. By monitoring the sea surface temperature, we can clearly come to conclusion. Sea surface temperature, atmospheric pressure. By observing the continuous observation of this, the pressure pattern and temperature pattern across the surface as well as the atmosphere, we can clearly see. We can just monitor. We cannot do anything else. Okay, we cannot change. We cannot modify. ये सब तो नहीं कर सकते. Then anything else? Yeah, effects of El Nino. So पहली बात है कि I told you already, whenever there is a El Nino is not only disturbing the atmospheric pattern of Pacific Ocean, it also causes the corresponding changes in the other parts of the ocean also, other parts of the world, Indian Ocean, okay, Atlantic Ocean, हर जगह में जो atmospheric pressure pattern है उसको वेरी करता है. So अगर यहाँ पर कंडीशन रिवर्सल हुआ, यहाँ पर भी रिवर्सल हुआ, यहाँ पर भी रिवर्सल हुआ, so हर जगह में रिवर्सल होते जाएगा. Okay, so that causes the global temperature and pressure variations. It is not only in Pacific Ocean, it triggers the pressure variations across different parts. So Pacific Ocean में क्या होगा? The temperature variation happens, the ocean water temperature variation happens, that triggers the variation in pressure. However, in other parts, it is just the pressure variation. Temperature तो almost same ही रहेगा, but still the pressure variation would cause the convection and subsidence. Convection subsidence उल्टा हो सकता है ना? कुछ जगह में जहाँ पर convection हो रहा था, दोबारा subsidence होना शुरू हो जाएगा. जहाँ पर कन्वेक्शन था, प्रेसिपिटेशन हो रहा होगा, तो अभी सबसिडेंस होके देयर इज नो प्रेसिपिटेशन. जहाँ पर सबसिडेंस हो रहा था, so where there was no precipitation, now it causes precipitation over there. So overall impact is it changes the global climatic condition by affecting the pressure patterns across the world. It affects the pressure patterns across the world. So surface temperature, in fact, it changes only along the eastern Pacific Ocean. Okay, El Nino causes the change in the surface temperature of Eastern Pacific Ocean. Otherwise, Western Pacific में भी ज़्यादा temperature variation नहीं होता है. In fact, Western Pacific में near to this Australia and this part of India also, we experience warm temperature. It is not just here. Overall, global level में हम warm temperature experience करते हैं along the ocean waters. So, but still we call it as high pressure. And compared to this, this is slightly lower temperature. But it doesn't mean that it is a cold water. इसलिए नॉर्मल जितना होना चाहिए था, ग्लोबल ओशनिक टेम्परेचर राइजेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एल नीनो. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एल नीनो द ग्लोबल ओशन टेम्परेचर राइजेस एंड दैट ट्रिगर्स कोरल ब्लीचिंग. है ना? ग्लोबल टेम्परेचर वेरिएशन अक्रॉस द ओशन कैन इजिली ट्रिगर कोरल ब्लीचिंग. है ना? सो कोरल ब्लीचिंग ऐसे भी नहीं है कि बस पानी का टेम्परेचर चेंज होने से ही होगा, बाकी सारा फैक्टर्स वहां पर ऑलरेडी है. द वाटर पोल्यूशन इज देयर, है ना? सो ओवरऑल सैलिनिटी इंक्रीज हुआ होगा, द सेडिमेंट्स इंक्रीज हुआ होगा, बाकी सारा है. दे आर ऑन द वर्ज ऑफ इट. सो एल नीनो जस्ट गिव्स अ पुश by suddenly rising the water temperature. It will start to bleach. The longest episodes of coral bleaching are observed during the years of El Nino, right?
So पहले impact था pressure. So लिखो first one. It causes global climatic imbalances. Global climatic imbalances through variations in pressure pattern across the world. Next, it causes global rise in ocean water temperatures. Causes global rise in ocean water temperatures. Which reduces the growth of algae and impacts the marine ecosystem across various parts of ocean. Is that right? Warm water में तो ज़्यादा algae नहीं आता है ना. Third, the warm temperature of the oceans trigger large scale coral bleaching. So और क्या होता है? So during El Nino there is a precipitation in desert regions of Peru, Chile, ना जहाँ पर precipitation चाहिए नहीं. It causes very heavy precipitation. Along coastal deserts of Peru and Chile. तो वहां पर और क्या इम्पैक्ट है? फिशिंग इंडस्ट्री. नेक्स्ट पॉइंट, द सप्रेशन ऑफ अपवेलिंग. Suppression of upwelling is devastating for the fishing sector, killing fish in large scale. Along Eastern Pacific,
Next point, decomposition of fish. Decomposition of fish releases hydrogen sulfide, causing dark waters, and making it toxic. So और क्या था? हाँ, making it toxic. Next point, the decline of fish causes migration of birds, along the coast of Peru and Chile. Impacting its fertilizer industry. और यहाँ पर क्या है? द हाई प्रेशर कंडीशन विल इम्पैक्ट द सराउंडिंग रीजन. यहाँ का लो प्रेशर इम्पैक्ट हो जाएगा, जिसके वजह से द विंड्स विच आर कमिंग फ्रॉम द ओशन टुवर्ड्स द लैंड, विच वी कॉल इट एज द मॉनसून विंड्स, दैट बिकम्स वीकन. एंड जैसे जैसे मॉनसून विंड वीकन होगा, यहाँ का प्रेसिपिटेशन भी वीकन हो जाएगा. Okay, it will impact the weakening of monsoon. It will cause the weakening of monsoon. राबी तो विंटर है, खरीफ इज समर. ठीक है. The high pressure along the western Pacific disturbs the flow of monsoon winds, causing drought conditions in India and Australia. एलिनो के वजह से कुछ अच्छा चीजें कुछ है? एनीथिंग पॉजिटिव? कहां पर? एक अच्छी चीज है, देखो जब एलिनो होता है, कैन यू सी दिस इज along the eastern part of Pacific Ocean there is a convection, and this is causing subsidence along the western Pacific as well as along Caribbean Sea. नॉर्मली क्या हो रहा था, यहां पर तो कन्वेक्शन हो रहा था, यहां पर भी कन्वेक्शन हो रहा था. सो कन्वेक्शन मीन्स cloud formation means precipitation. There is a high temperature here, there is a high temperature here. This high temperature, high evaporation is also good for formation of cyclones. यहां पर अच्छे से साइक्लोन्स बनेगा, यहां पर भी अच्छे से साइक्लोन्स बनेगा. वॉकर सर्कुलेशन जब होगा, there is good cyclone formation in both this part western Pacific as well as Caribbean Sea. अगर यहाँ पर हाई टेम्परेचर है तो यहाँ पर भी थोड़ा सा हाई टेम्परेचर रहेगा. इवन इंडिया इज ऑल्सो इम्पैक्टेड बाय दिस साइक्लोन्स, बट ड्यूरिंग एल नीनो द कंडीशन इज रिवर्स्ड. कि देयर इज ए सबसिडेंस जहाँ पर होगा कन्वेक्शन नहीं होगा, देयर इज नो क्लाउड फॉर्मेशन, देयर इज नो साइक्लोन. ओके, बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर साइक्लोन नहीं होगा, कैरिबियन सी में साइक्लोन नहीं होगा, यहाँ पर होगा नहीं होगा, मतलब इंडियन ओशन में पर्टिकुलरली द बे ऑफ बंगाल ऑल्सो विल नॉट एक्सपीरियंस मच ऑफ साइक्लोन्स. ये एक अच्छी बात है. ठीक है, नंबर ऑफ साइक्लोन्स विल बी लेस ड्यूरिंग दिस बिकॉज ऑफ द सबसिडेंस, बिकॉज ऑफ ओवरऑल चेंज इन द टेम्परेचर कंडीशन, राइट, प्रेशर कंडीशन की वजह से. राइट अबाउट दिस. ड्यूरिंग एल नीनो
high pressure along Western Pacific suppresses cyclones in India and Australia. Stop. High pressure along Caribbean Sea. High pressure along the Caribbean Sea results in low number of cyclones. Results in low number of cyclones. Caribbean Sea का तो I hope you guys are watching the news. कौन सा cyclone है? Ian. तो you might have seen कितना devastating effect हुआ है वहाँ पर, है ना? ठीक है. Sound नहीं है. Alaska, all the way to South America. A natural force of nature unlike any other. El Nino is capable of unleashing a fury of climate changes and natural disasters that span from Alaska all the way to South America and beyond. What causes El Nino, and how are we affected by it? El Nino is not a storm, but rather a weather phenomenon in the Pacific Ocean. During an El Nino, the surface water temperature warms up, leading to complex weather patterns. South American fishermen in the 19th century, describing warmer waters during Christmas time, coined the name El Nino, Spanish for the Blessed Child. Nowadays, when sea surface temperatures in the equatorial Pacific Ocean rise 0.5 degrees Celsius over their historic average for 3 consecutive months, and once atmospheric conditions and rainfall patterns shift accordingly, scientists officially declare an El Nino. An El Nino event takes place about every 2 to 7 years. Normal east to west trade winds over the Pacific weaken, and warm water that normally travels westward is now moving toward the east. Moisture then rises into the air, and the effects of El Nino are felt throughout the Americas. In the ocean, warm water pushes colder water downward, blocking the important upwelling of nutrient-rich waters from the bottom. This causes some marine life to migrate to colder waters. Animals that normally feed on the sea life suffer, and fisheries throughout Central and South America suffer too. But El Nino's most noticeable repercussions are felt on land. In the western United States and Central and South America, the warm air and moisture lead to increased storms, rainfall, floods, loss of life and property, and the increase of some vector-borne diseases like malaria, even in places where they don't normally occur. In Southeast Asia and Australia, the opposite takes place. These areas suffer from drought, wildfires, and colder ocean waters. In 1997 and 98,
the world experienced the biggest El Nino in recorded history. Some estimates blame that El Nino for 2,100 deaths and $33 billion in damages. Mongolia saw temperatures reach 108 degrees Fahrenheit. There was record flooding in Peru. And the US saw storms in the Gulf Coast, flash flooding from California to Mississippi, and tornadoes in Florida. Scientists are now better able to predict if and when an El Nino event will take place. This helps communities better prepare for the changes in weather patterns and better adapt to its repercussions. ठीक है, that is El Nino. हाँ, एक और ऐड कर देना इफेक्ट्स में. So during the period of El Nino, we experience wildfires in Australia. Wildfire. What is a wildfire? Forest fire. Forest fire in uncontrollable manner. बहुत large scale में हो जाता है. Okay, so we Australia experiences large scale wildfire. Australia experiences large scale wildfire. What is a wildfire? Forest fire. Okay, why it would be? Because of dry condition. बारिश नहीं है, ड्राई हो जाता है. And ऑस्ट्रेलिया का ओवरऑल टोपोग्राफी भी ऐसा ही है, वेजिटेशन भी ऐसा ही है. So there are higher chances. नेक्स्ट, एल नीनो मोडोकी. सुना है? एल नीनो मोडोकी. So this is like slightly twisted version of El Nino. थोड़ा सा टेढ़ा वर्जन है. So what is normal El Nino? In normal El Nino, we have convection here along the eastern Pacific. Okay, this is eastern Pacific. This is eastern Pacific. This is South America. Okay. Along this there is convection. There is subsidence along the western Pacific. है ना? So there is a cloud formation, precipitation. There is a dry condition here. And what is the direction of wind and water? West to east. Here it is rising and moving towards the west. This is normal El Nino. There is one big convective cell where the air is rising along the eastern part and subsiding along the western part. Western part तो बहुत दूर है, वहां जाके subside होगा, पूरा ऐसा continuously चलेगा. That is what is El Nino. So imagine this one big cell is divided into two smaller cells. एक बड़ा सा सेल को, कन्वेक्टिव सेल को छोटा छोटा सा बना दिया. That is, let's say there is convection at the central part of Pacific Ocean. At the central part, there is convection, and this air gets divided into two parts. One moves towards the east, another moves towards the west, and there it subsides along the west as well as east. This subsiding air will move toward the central part. Again, here it starts to rise. So here we had high temperature and low pressure. Here it is low temperature and high pressure. Here at the central there is a high temperature and low pressure. On the sides there is a low temperature and high pressure. That is what is El Nino Modoki. तो इसी को भी बोलते हैं El Nino Modoki. What happens in normal El Nino? There is convection on the eastern Pacific and subsidence on the western Pacific. During El Nino Modoki, there is convection on the central Pacific, subsidence along both eastern Pacific as well as western Pacific. Normal El Nino causes precipitation on the eastern Pacific and drought conditions on the western Pacific. During El Nino Modoki, the precipitation happens at the central Pacific. Drought condition happens at both eastern as well as western. जहां पर subsidence होगा वहां पर drought condition होगा. ठीक है? So that is El Nino Modoki. El Nino का ही twisted version है. So क्यों होगा?
ये भी नॉट श्योर, वी आर नॉट श्योर. ओके, ओवरऑल वेरिएशन जब होगा तो कलयुग में ये सब तो होता है. See, the overall pattern of the winds are disturbing, the pressure is getting varied, and that causes the variation in the convection and subsidence across different parts of the world, and all of them are connected. And जिसकी वजह से देखो यहां पर बड़ा सेल था, दूसरी जगह में कन्वेक्शन होगा, तीसरी जगह में सबसिडेंस होगा. यहां पर ये चेंज हो गया, दैट विल कॉज द सब्सिक्वेंट चेंज इन अदर कंडीशंस, अदर प्लेसेस ऑल्सो. यहां पर भी सेम इसका इंपैक्ट रहेगा. इंडियन ओशन में, अटलांटिक ओशन में भी इसका इंपैक्ट दिखेगा because of the reversal. Fine. So all the oceans, all the atmospheric conditions across different oceans, all of them are connected. एक जगह में प्रेशर कंडीशन चेंज करो, दूसरी जगह में करस्पॉन्डिंगली चेंज हो ही जाएगा. फाइन. सो नॉर्मल एल नीनो इज बैड फॉर बोथ ईस्टर्न पैसिफिक एज वेल एज वेस्टर्न पैसिफिक. इनके लिए बारिश नहीं चाहिए तो हमारे लिए ड्रॉट नहीं चाहिए. एल नीनो मोडोकी इज बैड ओनली फॉर द वेस्टर्न पैसिफिक. ईस्टर्न पैसिफिक तो एज इट इज ड्रॉट है, उनके लिए ड्रॉट चाहिए, वो सेफ रहेंगे. ठीक है. सो ये एडवांटेज है एल नीनो मोडोकी का. एटलीस्ट वन साइड तो बच गया, एक से दूसरी साइड में तो ड्रॉट होगा. ठीक है. दूसरा, जब नॉर्मल एल नीनो रहता है, आई टोल्ड यू यहां पर सबसिडेंस होगा, साइक्लोन थोड़ा सा सप्रेस होगा यहां पर, एज वेल एज अलोंग द कैरिबियन, सॉरी, एज वेल एज अलोंग द कैरिबियन द साइक्लोन्स आर सप्रेस्ड. एल नीनो मोडोकी में दोबारा आ जाएगा. ओके, कैसे? सो दिस इज एल नीनो, राइट? सो लेट्स से एल नीनो मोडोकी कैसे होगा? एल नीनो मोडोकी में यहां पर कन्वेक्शन हो रहा है, सो हियर इट इज सबसाइडिंग एज वेल एज हियर इट इज सबसाइडिंग. ओके, हियर इट इज गोइंग बैक. दिस इज कन्वेक्शन, दिस इज सबसिडेंस, दिस इज सबसिडेंस. अगर यहां पर सबसिडेंस हुआ तो यहां जाके दोबारा कन्वेक्शन होना शुरू हो जाता है. एंड कन्वेक्शन अगेन इज गुड फॉर साइक्लोन फॉर्मेशन. ठीक है. एंड फिर यहां पर सबसाइड हो रहा है तो सिंस द सेल हैज बिकम स्लाइटली स्मॉलर, ये यहां पर आके कन्वेक्शन होना शुरू कर देता है. इंडियन ओशन का सेल को भी थोड़ा सा छोटा बना देगा. Okay, here the air which is subsiding will start to move towards the west, and here it starts to rise. Where? In Arabian Sea. It will start to rise in Arabian Sea, फिर दोबारा इस तरफ आएगा, फिर ऐसे जाएगा. And because of the convection in Arabian Sea, we start to experience more cyclones. That is another condition when we have more cyclones in Arabian Sea than in Bay of Bengal. याद है मैंने बताया था अरेबियन सी में कुछ कंडीशन में होता है. That was during El Nino Modoki. जब एल नीनो मोडोकी होता है, अरेबियन सी में थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर होगा, कन्वेक्शन स्ट्रांग रहेगा, दैट विल कॉज हायर नंबर ऑफ साइक्लोन्स हियर. रादर बे ऑफ बंगाल इट इज हैविंग मोर क्लोजर association with this pressure cell, it will still suppress the number of cyclones. ठीक है. So that is what is El Nino Modoki. El Nino Modoki is like a twisted version of El Nino. So पहले बड़ा साइकिल था, वो छोटा हो गया, जिसके वजह से दूसरी कन्वेक्शन सबसिडेंस पूरा उल्टा हो गया. कुछ जगह में जहां पर कन्वेक्शन चल रहा था वहां पर सबसिडेंस होने लगेगा, फिर प्रेसिपिटेशन चेंज हो गया, साइक्लोन पैटर्न भी चेंज हो गया. ऑल ऑफ दिस इज एल नीनो मोडोकी. सो एक बार क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, तब एक्चुअली एल नीनो मोडोकी था इसलिए क्वेश्चन आया था. ठीक है, अदरवाइज तो रैंडमली नहीं पूछेंगे. ठीक है, राइट अबाउट दिस एल नीनो मोडोकी. इसका रिप्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा दिया. आई थिंक यू, आई होप यू हैव गॉट दिस, है ना. यू अंडरस्टूड दिस. देखो एल नीनो में क्या हो रहा है, यहां पर ऐसे एक एंजल आके इट इज जस्ट ब्लोइंग द एयर इन दिस डायरेक्शन. So that is causing the movement in this direction. एक ही एंजल है, so it is causing it. यहाँ पर दो एंजल आ गया, दोनों साइड से they are blowing the air. So दोनों आके बीच में मर्ज होगा, it will start to rise over there at the central Pacific. That is what is El Nino Modoki. ठीक है, right about this. While El Nino is characterized by El Nino is characterized by
strong warming in eastern Pacific Ocean El Nino Modoki results in warming of Central Pacific Ocean with cooling of eastern and western parts. Next paragraph. It creates a two-cell Walker circulation. Over tropical Pacific region with precipitation at the central part and dry conditions at eastern and western parts. Next point. While El Nino result in diminished hurricanes in Caribbean Sea, El Nino Modoki results in increased hurricanes Next point. During this time, cyclones occur more in Arabian Sea than Bay of Bengal. More in Arabian Sea than Bay of Bengal. Next. MJO. What is MJO? Michael Jackson. Madden-Julian oscillation. Madden-Julian oscillation. So in geography, there is a very classical method of explaining this Madden-Julian oscillation. बहुत easily समझा सकते हैं.
So all of us we have understood El Nino. El Nino तो समझ आ गया. So El Nino में क्या हो रहा है? There is convection along the eastern Pacific and subsidence along the western Pacific. Walker circulation is convection along the western Pacific, subsidence along the eastern Pacific. So Walker circulation ले लो. Take Walker circulation. So Walker circulation में क्या हो रहा है? You can see it from your end only. This is western Pacific, this is eastern Pacific, right? So there is a convection here, there is a subsidence here. So this is convection, this is subsidence. In which direction it is moving? Clockwise. Okay, for you this is clockwise. तो ऐसे imagine करो एक स्टेज है जहां पर ड्रामा चलता है, कॉमेडी सर्कस है ना, स्टेज के ऊपर. तो मतलब कॉमेडी शो ही मान लो. सो अर्लियर थिएटर ड्रामा में जोकर भी रहता था, है ना. यूजुअली वो क्या करते हैं, उनका जो सिंगल व्हील बाइसिकल में बैठ के चलाते रहता है. तो ऐसे एक सिंगल व्हील बाइसिकल अज्यूम करो. बाइसिकल नहीं, उसको क्या बोलते हैं? यूनिसाइकिल. ठीक है. ओके, ऐसे है, इसका एक सीट है, इसके ऊपर है. ठीक है. तो अगर ये पूरा इसके ऊपर जोकर हमारा बंदा बैठा है एंड इसका पेडल भी होता है, राइट? पेडल भी होता है ना, उसका पेडल भी होता है. सो मान लो वो इसी जगह में खड़ा है and he is just pedaling. Okay, he is still at one position and he is pedaling. Pedaling in which direction? He is pedaling in clockwise direction. Okay, ऐसे continuously he is pedaling, but same जगह में है. That is what is El Nino. ठीक है. So इस साइड में है साउथ अमेरिका, यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. सो यहाँ पर आएगा हमारा एशिया, थाईलैंड, ये सारा आ जाएगा. सो इमेजिन दिस इज व्हाट इज एल नीनो, राइट? देयर इज अ कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऐसे, बट इट इज स्टेशनरी. अभी हम क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे. ओके, द सेम पर्सन यहीं पे खड़े होके पेडल करके करके बोर हो गया. सो ही विल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेज टू ईस्टर्न पार्ट. ही विल कंटिन्यूअसली मूव. पेडलिंग तो सेम ही रहेगा. ये उल्टा हो गया ना. ठीक है. ही इज कंटिन्यूअसली मूविंग बट पेडलिंग इन द सेम डायरेक्शन. दैट मूविंग पार्ट इज MJO. एंड नाउ द एंटायर स्टेज इज द एंटायर अर्थ ऑल अलोंग द इक्वेटोरियल रीजन. ठीक है. सो दैट इज व्हाट इज MJO. पहले जगह में एक ही जगह में था, ओनली इन दिस पार्ट, एंड दिस इज व्हाट इज पैसिफिक ओशन. इस तरफ में इंडियन ओशन है, इस तरफ में अटलांटिक ओशन है, बट ये पूरा साइकिलिंग यहीं पे कर रहा है, पैसिफिक ओशन में ही कर रहा है. द एंटायर सर्कुलेशन इज हैपनिंग इन पैसिफिक ओशन ओनली. सो नाउ अलोंग द एंटायर ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द सर्कुलेशन इज देयर, बट द सर्कुलेशन इज मूविंग कंटिन्यूअसली, है ना. ये जो सर्कुलेशन एक ही जगह में स्टेशनरी था, here it is continuously rising, subsiding, continuously rising, subsiding. Imagine karo now that entire circulation is continuously moving. That moving circulation is MJO, Madden-Julian oscillation. Okay, what is Madden-Julian oscillation? It is eastward moving disturbance. Because all of these circulations are disturbance only. Why do we call it as disturbance? Because it causes disturbance in the atmosphere, which causes pressure.
प्रेशर चेंजेस की वजह से टेम्परेचर चेंजेस एंड देन प्रेसिपिटेशन चेंजेस, ये तो होगा ही होगा, प्रेसिपिटेशन होगा. मूविंग ईस्टवर्ड मूविंग डिस्टर्बेंस ऑफ क्लाउड्स, रेनफॉल एंड विंड एंड प्रेशर दैट ट्रैवर्सेस द प्लैनेट इन ट्रॉपिक्स. ट्रॉपिकल रीजन में ऐसे कंटिन्यूसली मूव होता है एंड रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट इन 30 to 60 days ऑन एन एवरेज. मतलब पूरा एक चक्कर लगा के वापस आने में 30 to 60 days लगता है. दैट मूविंग सिस्टम इज कॉल्ड एस मैडन-जूलियन ऑसिलेशन. इसको एक जगह में स्पेसिफिक क्वेश्चन में बिठा दो, यही है हमारा वॉकर सर्कुलेशन. इफ दिस इज फिक्स्ड हियर, देयर इज अ कन्वेक्शन, देयर इज अ सब्सिडेंस हियर, कन्वेक्शन सब्सिडेंस हियर, दैट इज व्हाट इज वॉकर सर्कुलेशन. दैट मूविंग वॉकर सर्कुलेशन इज MJO, मैडन-जूलियन ऑसिलेशन. So this MJO which is moving has two parts. One is convection part, another one is subsidence part. Along the convection part there is a continuous cloud formation, precipitation. Along the subsidence part there is a dry condition. So that means these conditions of convection and subsidence is continuously moving. A particular place, let's say this is India. Let's say this subsiding part is presently on India. As this system moves, after few days, यहां पर आ जाएगा convecting part. As the system moves, यहां पर subsidence था. After 1 or 2 months, maybe the convecting part will come here. So कुछ जगह में where there is presently the subsiding condition, where there is no precipitation, will start to experience precipitation after 1 or 2 months, when it starts to experience the convecting side. So that is the impact of MJO. This is like added layer on and above the Walker circulation. Walker circulation वहां पर ही रहेगा. Walker circulation था, उसका impact इस तरफ से उस तरफ से जो भी था वो तो वैसे ही रहेगा. It is just one more extra layer of moving part. It is just one more extra layer. ठीक है? In addition to El Nino. El Nino तो उसका impact अपने आप रहेगा, and in addition to that there is a moving part along the tropical region. Okay, so along the tropical region we have this continuously circulating part, continuously moving part. That continuously moving part is called as MJO. वो कैसे दिखता है? Like this. Okay, green color में जो दिया है that is what is convecting side. So brown color में subsiding side. Okay, continuously moving from east to west. Okay, observe करो, this is the convecting. ये जो blue color में central part में है, जो dark brown है सबसाइडिंग पार्ट है, बहुत ड्राई कंडीशन. दिस इज मूविंग. देखो साउथ अमेरिका ऑब्जर्व करो, फॉर सम टाइम इट इज ग्रीन, देन आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स ब्राउन. के ड्राई आ जाएगा, देखो फिर ग्रीन आ जाएगा, फिर ड्राई आ जाएगा, ब्राउन आ जाएगा, ऐसे कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है. दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज मैडन-जूलियन ऑसिलेशन. मैडन-जूलियन ऑसिलेशन. So now, what is the impact of Madden-Julian oscillation on India? If at all India is under the influence of subsiding part of MJO, the precipitation is suppressed, बारिश नहीं होगा, subsidence है, बारिश नहीं होगा. If at all India is under the influence of convecting side of MJO, अच्छे से बारिश होगा. ठीक है. Now club this with monsoon. लेट्स से मॉनसून सीजन है. ओके, लेट्स से मॉनसून सीजन है एंड अभी यहां पर है सबसाइडिंग पार्ट. विल इट इंपैक्ट द मॉनसून? यस, डेफिनेटली इंपैक्ट करेगा. इट विल रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ मॉनसून, प्रेसिपिटेशन थोड़ा सा कम कर देगा. सो अभी मान लो मॉनसून सीजन है और अभी कन्वेक्टिंग साइड आ गया. सो इट विल डेफिनेटली ऐड ऑन टू द प्रेसिपिटेशन, राइट? ठीक है. सो मॉनसून प्लस सबसाइडिंग सेल इज लेसर प्रेसिपिटेशन, मॉनसून प्लस कन्वेक्टिंग साइड मोर प्रेसिपिटेशन. तो अभी एक और एक आता है, मॉनसून प्लस एल नीनो प्लस सबसाइडिंग पार्ट, ड्रॉट कंडीशन पक्का होगा. मॉनसून प्लस एल नीनो प्लस कन्वेक्टिंग साइड, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन.
दोनों का इंपैक्ट नेगेटिव हो गया ना. एल नीनो का इंपैक्ट नेगेटिव था, कन्वेक्शन का पॉजिटिव था, दोनों न्यूट्रल हो गया, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन आ जाएगा. दैट इज वाई इंडियन मानसून इज नॉट डिसाइडेड बाय ए सिंगल फैक्टर. इसके साथ में एक और है, इंडियन ओशन डाइपोल भी है, वो भी लेके आएंगे. ठीक है. सो मल्टीपल फैक्टर्स विल डिसाइड द प्रेसिपिटेशन इन इंडिया. So that is also why El Nino always doesn't guarantee drought. The chance is 50%. The chance is 50%. अगर El Nino है पक्का ड्रॉट होगा, ये गारंटी नहीं है. ये डिपेंड करता है मैडन जूलियन ऑसिलेशन के ऊपर एज वेल एज इंडियन ओशन डाइपोल के ऊपर. ठीक है. अगर सारा नेगेटिव हो गया तो पक्का ड्रॉट होगा, अगर सारा पॉजिटिव हो गया तो पक्का फ्लड्स होगा. सो बीच में तो बैलेंस हो जाएगा एक दूसरे से. So write about this. Madden-Julian oscillation. No. MJO is something which is continuous. Throughout the year, every time. Throughout the year, पूरा ऐसे घूमता ही रहता है. El Nino is once in 7-8 years, but MJO is something continuous. इसका impact तो थोड़ा सा कम है. It is not a very strong circulation. It is just a moving circulation. Yes, it is a single circulation which is moving all across the globe. Single circulation which is just moving all across the globe. Madden-Julian oscillation. Unlike ENSO, El Nino Southern Oscillation, ENSO, unlike ENSO, which is stationary, MJO is an eastward moving disturbance. An eastward moving disturbance of clouds, rainfall, winds and pressure. Clouds, rainfall, winds and pressure that traverses the planet, in the tropics and returns to its initial starting point. Its initial starting point in 30 to 60 days. In 30 to 60 days on an average. (30 to 60 days on an average). Next paragraph. MJO has two parts. Okay, first one, convective side. Convective side with enhanced precipitation. Convective side with enhanced precipitation. Second, subsiding side. Subsiding side with suppressed precipitation. Next paragraph. MJO can modulate the timing and strength
can modulate the timing and strength of monsoon as well as, और क्या हो सकता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. सबसाइडिंग सेल जहां पर रहते हैं वहां पर तो साइक्लोन नहीं बन सकता है ना. ओके, द लास्ट वन, इंडियन ओशन डाइपोल. Indian Ocean dipole. So this is like El Nino Walker circulation of Indian Ocean. Okay, जैसे वहां पर पैसिफिक ओशन में वॉकर सर्कुलेशन है, एल नीनो है, सो इन द सेम वे इंडियन ओशन में भी है. उसका नाम हम दूसरा रख दिया यहां पर, इंडियन ओशन डाइपोल. ओके, दिस इज नॉट कनेक्टेड टू दैट. इंपैक्ट कनेक्ट हो सकता है. बोथ द इंपैक्ट ऑफ Indian Ocean Dipole IOD as well as El Nino may get connected, but they are not related to each other. ऐसा नहीं बोल सकता है कि El Nino के वजह से यहाँ पर IOD ऐसे नहीं बोल सकता. We cannot say so. तो वहां पर वॉकर सर्कुलेशन में क्या था? During Walker circulation there is a higher temperature on the western part. Okay, and cooler temperatures on the eastern part. Okay, there is a variation of temperature. In the same way there is also variation of temperature. It happens in Indian Ocean also. The water temperature of eastern Indian Ocean and the western Indian Ocean is always opposite to each other. Okay, it is always opposite to each other. अगर यहां पर hotter temperature है, यहां पर cooler temperature होगा. अगर यहां पर cooler temperature है, यहां पर hotter temperature होगा. This opposite behavior of Indian Ocean with respect to water temperature is called as Indian Ocean dipole. Dipole is a system with two opposite poles. Here referring to the water temperature. The water temperature of Indian Ocean always behaves in opposite direction with respect to eastern part and western part. So not technically eastern western part, this is slightly diagonal in shape. थोड़ा सा यहां पर इक्वेटर के नॉर्थ पार्ट में होगा, यहां पर इक्वेटर के साउथ में होगा. ठीक है. So referring to the waters near to Arabian Sea and off the coast of Somalia, here it is referring to the waters of Indonesia and Australia. दोनों का टेम्परेचर को हम रेफर करते हैं. सो इफ हियर देर इज अ हायर टेम्परेचर, देर इज डेफिनेटली, ओके, इफ हियर देर इज अ हायर टेम्परेचर, देर इज डेफिनेटली लोअर टेम्परेचर हियर. अगर हाई टेम्परेचर है तो देर इज अ गुड हीटिंग अप, स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन, क्लाउड फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन कॉजिंग हेवी रेनफॉल. हियर देर इज अ लो टेम्परेचर, दैट मीन्स हियर इट इज ड्रॉट कंडीशन इन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल. पॉजिटिव तो हमारे लिए है ना, पॉजिटिव याद रख सकते हैं, इजी. दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल. नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल, हियर देयर इज ए लो टेम्परेचर. ओके, टेम्परेचर इज लो, हियर द टेम्परेचर इज हाई. हाई टेम्परेचर causes heavy rainfall here, and here it is drought condition. This is what we call it as नेगेटिव IOD, नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल, पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल. इंडिया के लिए कौन सा अच्छा है? पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल. सो हाउ इट विल इंपैक्ट मॉनसून को, कौन सा इंपैक्ट करता है? पॉजिटिव इज पॉजिटिव फॉर मॉनसून. ओके, पॉजिटिव IOD इज पॉजिटिव फॉर मॉनसून, क्योंकि इफ एट ऑल द वाटर टेम्परेचर इज हायर हियर, द विंड्स विच आर कमिंग इन दिस डायरेक्शन कैरी गुड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर टुवर्ड्स इंडिया. हायर टेम्परेचर की वजह से एवोपरेशन ज्यादा रहेगा. एवोपरेशन ज्यादा है तो इट कैरीज गुड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर टुवर्ड्स इंडिया एंड कॉजेस हेवी रेनफॉल इन इंडिया ऑल्सो. इट इज गुड फॉर मॉनसून. अगर यहां पर टेम्परेचर ही कम है, एयर बिकम्स ड्राइयर एंड द एयर विच इज मूविंग इन दिस ड्राई एयर विल नॉट बी एबल टू कैरी मच ऑफ मॉइस्चर. इट कॉजेस ड्रॉट इन इंडिया. दैट इज व्हाट इज नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल. सो अभी बाकी दो लेके आओ. देयर इज एल नीनो, देयर इज सबसाइडिंग सेल ऑफ MJO एंड देयर इज नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल. पक्का ड्रॉट होगा. देयर इज डेफिनेट ड्रॉट. There is El Nino and convective side of MJO and positive Indian Ocean dipole. Rain normal होगा या above normal भी हो सकता है ना? It can be above normal also. So even during the El Nino years we can have above normal rainfall, right? So it is the combination of all of this. अगर La Nina है, convective side है और positive Indian Ocean dipole है तो very heavy rainfall, floods,
Possible hai. So it is all the factors which will decide the precipitation for India. See, not only the quantity of precipitation, I'm also talking about the timing of precipitation. Because the monsoon spreads over 3 to 4 months. So 3 to 4 months में ये condition reverse भी हो सकता है, क्योंकि MJO तो change हो जाएगा. It happens. Sometimes the first month is totally dry, second and third month is very heavy precipitation. It happens in monsoon. It is because of MJO, and maybe Indian Ocean dipole भी change हो चुका होगा. So all of these will decide. So there is so much of variation in Indian monsoon. है ना. अभी तो monsoon actual mechanism में बताया भी नहीं. इसके अलावा और ज़्यादा factors है. So we have the role of subtropical westerly jet stream, tropical easterly jet stream, heating of Tibetan plateau, heating of northern plains. बहुत सारा चीज़ें बात करेंगे. ठीक है. So write about this Indian Ocean dipole. The difference in sea surface temperature between Western Arabian Sea and Eastern Indian Ocean of Indonesia is called as Indian Ocean Dipole, IOD. Indian Ocean Dipole, IOD. Stop. Similar to MJO, it is a coupled ocean and atmospheric phenomena. It is a coupled ocean and atmospheric phenomena. ठीक है. So first one, positive IOD. Positive IOD. First point, warm sea surface along western part Next point, less precipitation in Indonesia and Australia. Less precipitation in Indonesia and Australia. Next point, good for Indian monsoon. Good for Indian monsoon. Next, reduces the impact of El Nino. Reduces the impact of El Nino on India. Next, negative IOD. Warm sea surface temperature in eastern part. Next point, more rainfall in Indonesia and Australia. More rainfall in Indonesia and Australia.
Next point, bad for Indian monsoon. Bad for Indian monsoon. Next, increases the impact of El Nino on India. Increases the impact of El Nino on India. ठीक है, तो उसके नीचे लिखो इंडियन मॉनसून plus El Nino. Okay, write the symbol plus El Nino plus convective side of MJO plus positive IOD equals normal or above monsoon, normal or above normal monsoon. है ना, सो उसमें ऐसा ही इक्वेशन आप बना सकते हो. एलिनो के जगह में एलिनो के साथ में एलिनो के जगह में लानिना डाल दो, फ्लड्स हो जाएगा. सो फिर कन्वेक्टिव साइड के जगह में सबसाइडिंग साइड डाल दो और पॉजिटिव के जगह में नेगेटिव आईओडी डाल दो, सो पूरा ड्रॉट हो जाएगा. दिस इज हाउ द एंटायर मॉनसून थिंग वर्क्स. It is the same reason why El Nino occurs. So we are not completely sure what is the process which is driving this. It is just the difference of temperature, difference of the pressure patterns, difference of convection. So all of this triggers this. नेगेटिव आई, हाँ आईओडी में ना, आईओडी ऑल्सो, हाँ ये वाला पॉइंट ऐड करना है आपको. जब पॉजिटिव आईओडी होगा, यू कैन सी दैट अरेबियन सी इज हैविंग हायर टेम्परेचर दैन बे ऑफ बंगाल. Arabian Sea is getting heated up. So positive IOD also experiences cyclones in Arabian Sea than in Bay of Bengal. So then negative IOD में देखो Bay of Bengal is more closer to the hotter region. So यहाँ पर और ज़्यादा cyclones हो सकता है. नहीं, ये वाला point ऐड कर दो. During positive IOD, Arabian Sea experiences higher number of cyclones than Bay of Bengal. So this was one of the question asked in mains, 2014 mains. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? So do you agree? Not completely. That is the answer. Of course unusual climatic happenings होगा. ओके, सो हर जगह में अनयूजुअल हो जाएगा. वहां पर रेनफॉल हो जाएगा, यहाँ पर ड्रॉट हो जाएगा, साइक्लोन कंडीशन रिवर्स हो जाएगा, बहुत सारा अनयूजुअल होगा. क्या क्या अनयूजुअल होगा ये सब बताना पड़ेगा इधर. उसके साथ में ये भी बोलना है कि ये पूरा 100% एलिनो के ऊपर ब्लेम नहीं करना है बेचारा, ये तो कारण नहीं है. सो देयर आर फ्यू अदर फैक्टर्स लाइक एमजेओ, आईओडी एंड द लोकल प्रेशर कंडीशंस. ऑल ऑफ दिस विल आल्सो डिसाइड. इसके साथ में उसका इम्पैक्ट भी बताना पड़ेगा. व्हाट अबाउट दिस? ये तो डायरेक्ट है.
कौन सा? डी और बी? बी फॉर बॉम्बे, डी फॉर दिल्ली. ठीक है, गुड. चलो ठीक है, मतलब समझ आए हैं. क्लियर है ना? ठीक है. नॉर्मल एलिनो में ईस्टर्न पैसिफिक होता है, एलिनो मोडकी में सेंट्रल पैसिफिक होता है. ये तो उल्टा दिया है, ये तो सही है. क्या है? और कोई आंसर है? आंसर इज डी. सो लानिना में इट्स नॉट इंडियन ओशन. लानिना एलिनो दोनों पैसिफिक ओशन ही है. सो फर्स्ट वन इज रॉन्ग. एलिनो हैज एडवर्स इम्पैक्ट, लानिनो हैज गुड इम्पैक्ट, है ना. सो यहाँ पर तो अच्छा खासा बारिश होता है लानिना के. ठीक है. सी बताइए. जाने के अर्जेंट में तो ऐसा ही होगा आंसर. तो यूपीएससी में ऐसे ही होता है, ध्यान से कि आराम से देख के करना. तो यहाँ पर देखो, ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन दिया है. वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, मतलब इट इज कंपेयरिंग बिटवीन अरेबियन सी एंड ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू. इतना तो नहीं है ना. सो इट इज नॉट ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, इट शुड बी ईस्टर्न इंडियन ओशन. ठीक है, फर्स्ट वन इज रॉन्ग, सेकंड वन इज राइट. ठीक है. सो एक और छोटा सा चीज़ है, वो नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा. ट्रिपल डिप तो वही है जो लानिना 3 साल के लिए कंटिन्यू हुआ, तो इसलिए उसको ट्रिपल डिप बोला है. लानिना की वजह से क्या होगा? फ्लड होगा. इस साल भी एक्सेस बारिश हुआ है, दैट इज व्हाट इज ट्रिपल डिप. ठीक है. जो सी आज जो टॉपिक्स डिस्कस किया है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है. आई वुड सजेस्ट गो बैक एंड रीड व्हाट आई हैव टॉट अगेन. पहले मेरा नोट्स पढ़ो, जो मैंने लिखवाया है उसको पहले पढ़ो, देन रीड फ्रॉम एनसीईआरटी और एनी अदर सोर्स, then you come and ask me any of the doubts in the next class. ठीक है. So I'll take the doubts in the next class. Thank you.